So good morning students. बच्चे we started off with hydrogen in the last lecture and ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ a basic introduction कि how does hydrogen relate to alkali metals and halogens and at the same time how does it differ from alkali metals and halogens. So basically it doesn't have any fixed position in the periodic table. ना तो उसदियां properties alkali metals ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਹੀ halogens ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ that is why it is called a log element. Then we did types of hydrogen, ठीक है, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ortho and para hydrogen, active hydrogen, atomic hydrogen, nascent hydrogen, occluded hydrogen etc ਕੀਤਾ ਸੀ, ठीक है. ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਬੱਚੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ that is hydrides. So the topic for today is hydrides बच्चे, ठीक है. So today's topic is hydrides. Hydrides का मतलब की है बच्चे? So what do you mean by basically hydrides? This is compounds of hydrogen. So basically hydrides की है compounds of hydrogen. So देखो जितना क्लोरीन ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਆਕਸਾਈਡਸ and similarly hydrogen ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ we call them hydrides. You getting the point? Now, so compounds of hydrogen we have four types. Ionic, ठीक है, ionic hydrides. Number 2, covalent hydrides. So number 2 is covalent. So covalent hydrides. Number 3, जितना अपन ने कल किया सी interstitial hydrides, जिन्हें अपन एक होल नेम देता सी occluded hydrides. So interstitial or occluded hydrides. And finally we have bridged और जिसमें आप एक नेम देने हैं polymeric hydrides. Bridged और polymeric hydrides बच्चे, ठीक है. Now we know कि hydrogen is a non-metal, ठीक है. So when it combines with very strong metals, जेरे compounds बनते हैं उन्हें आप कहते हैं ionic hydrides. So ionic hydrides are formed with metals. And metals भी केड़े बच्चे? Very strong metals like sodium, potassium, calcium, etc. Fine. So these are the ionic hydrides. Compound का formula की बनेगा? Sodium hydride will be NaH, potassium hydride KH, calcium hydride CaH2. Fine. So metals are +1, sodium is +1, hydrogen is -1, potassium is +1, hydrogen is -1, calcium is +2, hydrogen is -1. So basically hydrides are the compounds where hydrogen is in -1 oxidation state, ठीक है. So ionic hydrides are the compounds in which oxygen is in -1 oxidation state. क्योंकि वो metals नाल combine कर रही है, तो metals will be positive and hydrogen will be -1. अपन redox ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਇਓਨਿਕ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ -1. ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ covalent hydrides. These are formed by hydrogen with non-metals, ठीक है. So when hydrogen combines with other non-metals, the compounds are called covalent hydrides, ठीक है ना. With other non-metals, the compounds are called covalent hydrides. Example: water, ammonia, methane, etc. ठीक है. Water, ammonia, methane, etc. So when hydrogen combines with other non-metals, the compounds are called covalent hydrides. Fine. Now here hydrogen exists as
ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ +1 ठीक है ना the valency या oxidation state of hydrogen in these compounds is +1 क्योंकि दोनों कंबाइन कर रही है विद नॉन मेटल्स ऑक्सीजन इज -2 देखो ऑक्सीजन के आउटर शेल च कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ने 6 सो -2 हाइड्रोजन इज +1 नाइट्रोजन इज -3 हाइड्रोजन इज +1 कार्बन इज -4 हाइड्रोजन इज +1 you getting a point now इंटरस्टिशियल या ऑक्लूडेड ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ नो नीड टू टेल अबाउट दिस ਆਪਾਂ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ bridged or polymeric hydrides now these are formed by hydrogen when it combines with ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਟਲਸ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕਲੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੌਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਟਲਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਹੀ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਵੀਕਲੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ when hydrogen combines with elements whose electronegativity ranges from 1.4 to 2 ਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 1.4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ अगर हाइड्रोजन कंबाइन करेगी तो जेडे हाइड्राइड्स बनते हैं दे आर कॉल्ड ब्रिज्ड और पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स ये मैं दसूंगा कि इन्होंने ब्रिज्ड या पॉलीमेरिक ਆਪਾਂ क्यों कहते हैं ठीक है ना you getting a point so metals ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ these metals are beryllium magnesium aluminium so all these metals are very weak metals ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ strong metals ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ getting a point So with strong metals, it forms ionic hydrides. With non-metals, it forms covalent hydrides. And with weak metals, जिन्हों की electronegativity ranges from 1.4 to 2, it forms bridged या polymeric hydrides. ठीक है? So ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ chemical bonding ਦਾ chapter नहीं ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ठीक है? ਤਾਂ ਮੈਂ just ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜੋ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होती हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चे 2.1 सो जिन्ने भी नॉन मेटल्स होंगे उन्हां दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज विल बी हायर देन हाइड्रोजन सो देखो नाइट्रोजन इज 3 ऑक्सीजन इज 3.5 फ्लोरीन इज 4 सो मेटल्स दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इन्हां तो घट ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 1.4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋ 1.4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਵੈਰੀ ਵੀਕ ਮੈਟਲਸ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ these are the types of hydrides ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ now we shall start off with the first type of hydride that is ionic hydrides when the hydrogen combines with very strong metals done So firstly we shall start off with ionic hydrides. So ionic hydrides कदों बनते हैं जब hydrogen combines with highly electropositive elements, very strong metals. ठीक है? So केड़े-केड़े होंगे हैं बच्चे अपने पास? Alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. ठीक है? Alkaline earth metals. सो उस दे विच आपां किहड़े इंक्लूड करांगे कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम नॉट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम बिकॉज उन्हां दी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बच्चे इतनी ज्यादा नहीं हुंदी दे विल फॉर्म ब्रिज्ड हाइड्राइड्स ठीक है ना some lanthanides and actinides and P block ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ these are your
metals that form ionic hydrides, ठीक है ना। सो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ -1, ठीक है। the most common hydrides, for example sodium hydride, sodium is +1, hydrogen is -1. calcium hydride, calcium is +2, hydrogen is -1. बच्चे याद रखना है calcium hydride, it exists in the form of crystals known as hydrolith. calcium hydride exists in the form of crystals known as hydrolith. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ hydrolith. fine. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ we'll talk about alkali metal ਦੇ hydrides. ਸੋ ਦੇਖੋ so बच्चे alkali metal hydrides are lithium hydride, lithium तो नीचे sodium, sodium hydride, potassium hydride, rubidium hydride and cesium hydride. जिमें जिमें ਆਪਾਂ नीचे जा रहे हैं cation ਦਾ size is increasing, जबकि anion जो है hydride H- ਉਹਦਾ size ਤਾਂ same है. so cation ਦਾ size ਵਧੂਗਾ, इंटर आयनिक फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगियां. सो जिमें जिमें तुसी नीचे आ रहे हो द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग. इन्हां विचों सब तो स्टेबल हाइड्राइड केड़ा होएगा लिथियम हाइड्राइड एंड मिनिमम स्टेबल हाइड्राइड केड़ा होएगा सीजियम हाइड्राइड. सिमिलरली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपां ने कहा कि बेरिलियम ते मैग्नीशियम ता हाइड्राइड बनांदे ही नहीं. कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मूला CaH2, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड का फॉर्मूला SrH2, बेरियम हाइड्राइड का फॉर्मूला BaH2 एंड सिमिलरली ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस. सब तो ज्यादा स्टेबल कैल्शियम हाइड्राइड होएगा, लीस्ट स्टेबल बच्चे बेरियम हाइड्राइड होएगा. डन. सो दिस इज अबाउट द स्टेबिलिटी, ठीक है. नाउ वी शैल मूव ऑन टू देयर प्रॉपर्टीज बच्चे, ठीक है ना. सो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स. सो देखो बच्चे हुन ਆਪਾਂ आयोनिक हाइड्राइड्स ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं. नाउ प्रॉपर्टीज ਨੂੰ स्टडी ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇੱਕ NaCl ਲੈ ਕੇ ਆਓ जो टिपिकल एग्जांपल अपनी सोडियम क्लोराइड दी जो आप घरे नमक खाने हैं, ठीक है ना. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. नंबर 2, poor conductors of electricity. poor conductors of इलेक्ट्रिसिटी. इन्हां दे विचों बिजली पास नहीं हुंदी बच्चे. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नंबर 3, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नंबर 3, दे आर गुड conductors in their molten state. हाँ जी, आपने ये केमिकल बॉन्डिंग कीता होया ना बच्चे कि अगर तुसी सॉलिड स्टेट चलाओगे तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ लो in their solid state. बट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਊਜ਼ਡ ਫਾਰਮ, ਫਿਊਜ਼ਡ ਸਟੇਟ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਤਾ, ठीक है ना, पिघली हुई फॉर्म च, मेल्टेड फॉर्म च, दे बिकम गुड कंडक्टर्स. कितना? सो देखो दिस इज सोडियम हाइड्राइड. आपा इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कीती, इट विल ब्रेक डाउन इनटू Na पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव, ठीक है. सोडियम प्लस कीटायन कैथोड पे चला जाएगा. सो एट कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी हुई है ना पहला भी. कैथोड पे की होएगा
sodium will gain electrons to form sodium metal at anode. Hydride ion will lose electrons to form hydrogen gas. Fine. इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ते दो हाइड्रोजन्स मिलके H2 गैस बन जूगी, ठीक है। सो बिल्कुल जिद्दां आपां NaCl एक आयोनिक कंपाउंड दी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके नाल इन्हां दी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है जी। क्लियर? आई होप डन, ठीक है। सो वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। So the fourth property says, they are very strong bases. They are very strong bases. They are very strong bases. ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ metals ਦੇ compounds ਹੁੰਦੇ ਨੇ, they are bases normally, ठीक है ना। So they are very strong bases, ठीक है। now this is important. They are very strong reducing agents. They are very strong reducing agents बच्चे। So they are very strong reducing agents also, ठीक है। They are very strong reducing agents. For example, they reduce carbon dioxide to sodium formate. They reduce carbon dioxide to sodium formate. So reaction किवें हुंदी है देखो, CO2 तुसी ऐड कीता बच्चे विच NaH, ठीक है। So की बन गया देखो HCOONA. So you get HCOONA. So this is sodium formate. So they are very strong reducing agents and they reduce carbon dioxide to sodium formate. अगर तुसी इत्थे चेक करोगे, जेडे बच्चे redox reactions दा चैप्टर कर चुके हैं, ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ +4, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਬੱਚੇ +2, ਇੱਥੇ +4 ਹੈ, ਇੱਥੇ +2, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਰਿਡੌਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਡੌਕਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਡੌਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ +4 ਤੋਂ +2 ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ -1 ਤੋਂ +1, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ठीक है। So they are very strong reducing agents. जिद्दां कि metals are reducing agents, they are also very strong reducing agents बच्चे। So बच्चे point number 6 now, they react violently with water. They react violently. अच्छा, now this point is very important. They react violently with water to form bases and H2, ठीक है। They react violently with water to form alkaline compounds and H2. कितना बच्चे देखो, like this is your NaH, for example, you add water to it, it will give you NaOH plus hydrogen. ਹੁਣ बच्चे इस रिएक्शन च इंपॉर्टेंट की है, the reaction, this reaction मतलब hydrize the reaction with water is highly exothermic. It is highly exothermic. Is highly exothermic and a lot of heat is produced. A lot of heat is produced. बच्चे रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है और इस दे विच बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਮੀਨਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਕੈਚ ਫਾਇਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਕੈਚ ਫਾਇਰ। ਸੋ H2 being inflammable catches fire, catches fire, clear? सो ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਇਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ। अगर तुसी ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ being inflammable catches fire which cannot be extinguished, which cannot be extinguished, which cannot be extinguished by pouring water। ਸੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਮੈਥਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਮੈਥਡਸ। ਨੰਬਰ 1 ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾਈਡ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 CO2। ਤੇ CO2 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਫਾਰਮੇਟ ਵਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 5 ਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ CO2 ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਾਟਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੰਬਰ 1 CCl4, ਨੰਬਰ 2 ਬਾਈ ਪੋਰਿੰਗ ਸੈਂਡ ਓਵਰ ਇਟ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ। अच्छा बच्चे याद रखना जो CCl4 है it is used as a fire extinguisher under the brand name pyrene। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦ ਨੇਮ ਪਾਇਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਕੱਲਾ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਫਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਵਾਟਰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ CO2। ਤਾਂ ਬੱਚੇ CO2 ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ CO2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਸੋਡੀਅਮ ਫਾਰਮੇਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ। one is CCl4 and the other is sand। done, clear? The last point under ionic hydrides is, likho, the last point under ionic hydrides is so likho बच्चे, so last point, they can react with other hydrides forming complex hydrides, forming complex hydrides। complex hydrides मतलब ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੋ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਲੀਥੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡ AlH3, फाइन। दोनों जुड़ के एक सिंगल हाइड्राइड बन गया, lithium aluminium hydride। So this is called lithium aluminium hydride, fine। Similarly अगर मेरे पास सोडियम हाइड्राइड है, मैं इस दे विच पाती बोरेन B2H6, 2 मोल्स ले लो। देखो इसका एग्जैक्टली डबल है,
है ना, एल्यूमीनियम की जगह पे मैं बोरॉन यूज किया है तो BH3 बन गया ना, तो B2H6 डबल, तो मैं ये दो ले ले, है ना, तो मेरे को बन गया 2 मोल्स ऑफ NaBH4 सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। फाइन, सो दीज आर योर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ठीक है बच्चे, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स है याद रखना है, दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ਚ यूज ਕਰਾਂਗੇ। सो these complex hydrides are very strong reducing agents. These complex hydrides are very strong reducing agents. Complete karo line nu, used in organic reactions. These complex hydrides are very good reducing agents used in organic reactions. Fine. So this is all about ionic hydrides बच्चे, इन्हें अपन ने चंगी तरह कर लेना है। Now the next topic जो अपन ने start करना है, that is called covalent hydrides. So बच्चे next is covalent hydrides formed with electronegative elements. Formed with electronegative elements, in fact highly electronegative elements. वो केड़े हुंदे हैं बच्चे? Groups 14 to 17. Group 14 केड़ा हुंदा है बच्चे? Carbon family. 15 is nitrogen, oxygen, then fluorine. Fine. So is there a hydride? The formula will be methane, ammonia, water, HF. Clear? So these are your hydrides. Fine? Clear बच्चे? ठीक है? Done? जो ग्रुप 14 के हाइड्राइड्स होंगे ने, they are neutral. Group 15 के हाइड्राइड्स are basic. Group 16 the hydrides are again neutral, and group 17 are acidic, and group 17 are acidic बच्चे. Fine, done, clear, done बच्चे, ठीक है. Now again जिद्दां आपां ने ionic hydrides कीता सी कि while moving down in a group हाइड्राइड्स दी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करनी है, सेम इत्थे भी डिक्रीज करेगी। व्हाई? देखो बच्चे, सो इफ वी टॉक अबाउट देयर स्टेबिलिटी, सो द सेकंड पॉइंट, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स decreases down the group. The stability of hydrides, एक particular group ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ hydrides ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ stability decrease ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ? So let it be, we can take the example of nitrogen family. चलो ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ families ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, nitrogen, oxygen, fluorine, क्योंकि ये तीनों families they consist of typical non-metals, है ना? So देखो, इसका hydride ammonia, इसके नीचे बचे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, वाटर, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, HF, HCl, HBr, HI. Fine. So thermal stability decreases down the group. So जिवें जिवें मैं नीचे आ रहे हैं ग्रुप दे विच जो थर्मल स्टेबिलिटी है
थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब की होया बेसिकली बच्चे कि मैंने कितनी हीट देनी पड़ेगी इन्हों तोड़न लई बॉन्ड्स ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਐਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਨਟੂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਬਿਸਮੁਥ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो सब तो घट साइज किदा है फ्लोरीन दा while moving down in the group साइज बढ़ जाता है ठीक है ना सो साइज बढ़ने नाल बॉन्ड दी लेंथ बढ़ेगी सो देखो अगर HF दी बॉन्ड लेंथ एनी है HCl इस तो बड़ी होएगी HBr इस तो बड़ी होएगी HI सब तो बड़ी होएगी सो इना चारों विचों सब तो इजी किनु है तोड़ना जो सब तो बड़ा बॉन्ड है ये सब तो जल्दी टूटेगा ये सब तो लेट टूटेगा सो सब तो ज्यादा स्टेबल एंड सब तो कट स्टेबल गेटिंग अ पॉइंट सो इजी वे टू रिमेंबर सो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स बच्चे पहला तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ HF ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ HI ਨੂੰ ਸੋ ਟੌਪ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਡਨ next character so next character number 3 so point number 3 बच्चे the acidic character of hydrides increases down the group सो अगर मैं इन सारे हाइड्राइड्स की गल करा ठीक है तो सब तो ज्यादा एसिडिक केड़ा होएगा बिल्कुल नीचे वाला ते सब तो ज्यादा बेसिक केड़ा होएगा ऊपर वाला सो देखो बच्चे ध्यान नाल सुनो सो एसिडिक करैक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ठीक है देखो आ चारों एसिड सीगे अगर मैं तुहानू पूछां कि सब तो स्ट्रॉन्ग एसिड केड़ा है HI HBr इस तो वीक HCl इस तो वीक HF सब तो वीक उल्टा ये सारे की सीगे बेसिक तो इन्हां विचों सब तो स्ट्रॉन्ग बेस केड़ा है ऊपर वाला सब तो वीक बेस केड़ा है नीचे वाला ठीक है ना सो देखो दिस इज योर वीकेस्ट एसिड and HI is your strongest acid so base the case ulta ammonia is your strongest base and BaH3 is your weakest base done के नहीं और क्लियर बच्चे ठीक है सो जेड़ा एसिडिक करैक्टर है मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा ठीक है ना पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कदे ना कदे ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम जरूर आएगा चाहे +1 चाहे +2 दोनों कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सो व्हाइल मूविंग डाउन थर्मल स्टेबिलिटी घटूगी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ूगा देखो बच्चे ਉਹਦੀ भी एक्सप्लेनेशन है सब तो इजी केड़ा बॉन्ड तोड़ना ए वाला ठीक है जो सब तो इजीली टूटूगा तो सब तो इजीली H रिलीज करूगा ते H ਨੂੰ रिलीज करना ਕੀ ਹੁੰਦਾ एसिडिक कैरेक्टर देखो ना व्हाट डू यू मीन बाय एन एसिड द सब्सटेंस व्हिच गिव्स यू H पॉजिटिव आयंस है ना तो सब तो जल्दी ब्रेक डाउन होके H पॉजिटिव कौन देगा HI सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्लियर सो बच्चे द नेक्स्ट हाइड्राइड्स जो अपन कल कवर कर चुके हैं इंटरस्टिशियल और occluded हाइड्राइड्स फाइन सो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल एक कौन बनाता है मोस्ट ऑफ द D and F block metals most of the D and F block metals जिन्हां दा साइज ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ एटम्स ਦਾ ਸੋ ਇਸ ਲਈ एटम्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸਿਸ ਬਚਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ कि metals like nickel, platinum,
palladium can absorb 500 times their volume of hydrogen. याद है ना? ठीक है. नेक्स्ट अपन ये भी कीता सी कि दिस एडसॉर्प्शन प्रोसेस मतलब हाइड्रोजन दा इंटरस्टिशियस दे विच बैठना is directly proportional to pressure but inversely proportional to temperature. ठीक है. अगर तुसी इसनु हीट करोगे तो जेडी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हुई भी है वो बाहर निकल जाएगी. ठीक है ना? याद है कि नहीं? ठीक है. Adsorption is also directly proportional to surface area. मतलब अगर तुसी अपने मेटल्स नू फाइनली ग्राइंड कर दोगे, छोटा साइज च ले आओगे, ठीक है ना, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ हाइड्रोजन एडजस्ट हो सकती है. ठीक है. हाँ जी बच्चे, सो ये सारा कुछ तो आप कल कर चुके. ठीक है. द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड टुडे इज हाइड्राइड गैप. हाइड्राइड गैप बच्चे. ठीक है. देखो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है दे कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स 3 to 12. पता ना अपन ग्रुप 3 तो लेके ग्रुप 12 तक देयर आर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जेडे की अपने इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं. बट ग्रुप्स 7 8 9 सो बच्चे इस दे विच ही आ गए ना 3 to 12 दे 7 8 9 ग्रुप्स वाले जो एलिमेंट्स है दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स. They do not form interstitial या occluded hydrides and that is why जो ये 7 8 9 ग्रुप तीन का गैप आ गया ना विच देखो 3 4 5 6 बनाएंगे and then 10 11 12 बनाएंगे. 7 8 9 ग्रुप्स वाले मेटल्स जो है वो हाइड्राइड्स नहीं बनाएंगे and that gap is known as hydride gap. Fine. ठीक है. सो बाकी सारा कुछ आप कल कर चुके हैं, तुसी उत्थों भी पढ़ सकते हो, इत्थों भी पढ़ सकते हो. ठीक है. Now we shall move on to the last type of hydrides, that is bridged या polymeric hydrides. So come on to the last type of hydrides. So देखो ना देख. So these are called bridged या फिर पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स. सो अपन ने कर लिया कि जेडे बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स है दे फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड्स. जेडे स्ट्रॉन्गली नॉन मेटेलिक है बच्चे नॉन मेटल्स दे फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स. हुन जेडे विच विचाले वाले रह गए ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स है ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स है ना. लाइक फॉर एग्जांपल बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, they form these kinds of bridged या polymeric hydrides. ठीक है ना. bridged और polymeric hydrides ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ देखो बच्चे. ਹੁਣ लाइक फॉर एग्जांपल जो BeH2 है, so BeH2 does not exist as BeH2. ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ है देखो. ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚੇ. so देखो BeH2 is this BeH2. fine. एक और BeH2, another BeH2 and so on. So what they will do is देखो बच्चे ध्यान ना सुनो. what they will do is एक मॉलिक्यूल दा बेरिलियम और दूसरे मॉलिक्यूल दे हाइड्रोजन्स आपस विच लिंक हो जाएंगे थ्रू ब्रिजेस. These are called hydrogen bridges. बच्चे ना बॉन्ड्स नहीं कहना. so देखो and so on. ये आगे लिंक हो जाएगा, आहा वाले हाइड्रोजन्स आगे बेरिलियम ਨਾਲ लिंक हो जाएंगे. सो ਜਿਹੜੇ आहा वाले bonds kind of अपन दिख रहे ने these are called hydrogen bridges. बच्चे ध्यान रखना है ना ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है ना. सो बेसिकली हुन मैं BeH2 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ. ਤਾਂ BeH2 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ BeH2n. So bridged या polymeric hydrides.
ठीक है ना, कि n नंबर ऑफ BeH2 आपस में लिंक होके ये बन गया। ठीक है, another very important example मैं जरूर देना है जो अपने P ब्लॉक ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ना भी है। ठीक है, सो देखो बच्चे, सो देखो ਹੁਣ अगर मैं बोरॉन ਤੇ हाइड्रोजन ਦਾ बॉन्ड बनाਵਾਂ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि बोरॉन ਤੇ हाइड्रोजन ਦਾ मॉलिक्यूल बनाओ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ कि बोरॉन ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स है, ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BH3 ਬਣ ਗਿਆ। ठीक है, बट BH3 नहीं ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ B2H6। ठीक है, another example is B2H6। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ, so B2H6 देखो BH3 का डबल है, so this is BH3, then एक और BH3, फाइन। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਬੋਰੋਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬ੍ਰਿਜਸ। So that is why जो BH3 है it exists as B2H6। Fine। So this is about bridged या polymeric hydrides बच्चे, ठीक है ना। So we have completed hydrides। ਹੁਣ next जो lecture है ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ isotopes of hydrogen and somewhat about water। ठीक है, एंड उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੇ मूव करना है hardness of water, जो ਤੁਸੀਂ I think junior classes 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ कि ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स एंड हार्डनेस टू रिमूव किवें करना है, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। सो एक छोटा सा चैप्टर है बच्चे, ये हार्डली विद इन अ वीक विल कंप्लीट इट। ठीक है ना, एंड विल बी डन विद अनदर छोटा सा एक चैप्टर। ठीक है ना, क्लियर। देन व्हाट वील डू इज या तो ਆਪਾਂ इनऑर्गेनिक ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਥੀ ਚੈਪਟਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਵੀਲ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ठीक है ना, so this is how we'll maintain it। एक छोटा सा चैप्टर, एक दो छोटे से चैप्टर एंड एक लेंथी चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर एंड देन लेंथी चैप्टर, फिर उस दे नाल अपना नाल दा सिलेबस मूव ऑन करदा रहेगा। ठीक है, एंड नाले ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक मतलब कई बार ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਥੀ ਬਲਕੀ ਚੈਪਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬਾਈ ਅ ਸਮਾਲ ਚੈਪਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡਲੀ ਅ ਵੀਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ है, सो today we have done 4 types of hydrides: ionic, covalent, bridged and interstitial। बच्चे इंपॉर्टेंट है खास तौर पे bridged and interstitial hydrides, इन्होंने चंगी तरह पढ़ लेना है। ठीक है, so we'll to meet tomorrow with the next lecture। So till then बच्चे, goodbye, thanks a lot।